But thank you very much. I think you yourself are an amazing person. What I really like about you is, and this was never discussed in our earlier conversation. I think you're after an HR professional. It's so original, authentic. It's Hassan Raza. It's HR, and you yourself, mashallah, have grown so much into. We met over a decade back, and mashallah, you've grown. You've added value to any position that you've been in. On and off, by the way, I've been following. I think over LinkedIn, over Facebook. We find out what's happening. So mashallah, you've done a great job, and I think ये पूरा जो HR professional का आपने जो pep talk जो शुरू किया, I think it's a wonderful initiative, and I really like the kind of guests that you've been following. बल्कि कहीं मुझे ये भी होता था, मेरे इतने दोस्त जा रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं कांटेक्ट किया. तो आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और दे रहा हूँ. ये लिख के आप अपने पास रख लें. जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप दुनिया के फारिग तरीन आदमी हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है. अब आप शायद हैरान होकर सुन रहे होंगे कि हसन रज़ा हमें ये कह रहा है कि आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है. मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको. आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो कुछ लोग सुनेंगे. आपने इन लोगों के सामने कामयाब होकर दिखाना है. जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ये लोग आपकी अपनी पूरी फैमिली में या इर्द गिर्द हर जगह आपकी मिसालें दे रहे होंगे और कहेंगे यार ये वो बंदा है जो मेरे साथ बैठता था, जो मेरे साथ बात करता था. इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तब सारी दुनिया सुनेगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Assalamu alaikum everyone. This is Hassan Raza
the founder of Pep Talk Pakistan. Thank you for joining us today's show, where I always bring amazing people who are going to help you, inspire you passionately. Let's discuss about today's session. We will be having this session in two medium. One is Urdu and second is English, so the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, my today guest is phenomenal. Joining us today, a top-notch software engineer of Pakistan, particularly in ROR. And you know what? He is amazing. You know what? He has done a lot of things in the field of software engineering. We will discuss about him. Ladies and gentlemen, you know what's special about him? He is always ready to help guide job seekers. So let me introduce today's guest, and his name is Muneeb Ahmed. He's currently working in Demand Software in the capacity of software engineer. Today, he will be sharing his views on how to become ROR engineer. Let's welcome Muneeb. Muneeb, it's good to have you here. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much, Hassan, for a soft introduction. Thank you. Thank you again. Great, wonderful. अच्छा मुनीब, मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे शोज करता रहता हूँ और वेरी डिफरेंट एपिसोड जो हैं वो आती रहती हैं. तो मुझे पर्टिकुलरली एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी कि आप टेक्निकल कोई जो इंटरव्यू है वो भी करें और देखें कि किस तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो हमारे काम कर रहे हैं. तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जैसे ROR के ऊपर मैंने भी सोचा कि हमें इसके ऊपर प्लान करना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इसको बोला कि मैं हाजिर हूं. तो थैंक यू वेरी मच एंड क्रेडिट गोस टू यू. थैंक यू. वेलकम. ग्रेट. सो हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बिकम ROR इंजीनियर. हम जरूर टॉपिक पे बात करेंगे, इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे. हमारा फॉर्मेट है पेप टॉक पाकिस्तान का कि जो भी गेस्ट हमारे साथ आते हैं हम उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो जरूर सुनते हैं. तो मुनीब, ओवर टू यू. कैसे करियर का स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली ROR का, क्या क्या जो अचीवमेंट्स रही. जी मुनीब, ओवर टू यू. Yeah, sure. Okay, I started back in 2013 from a company named Testalio mainly. So I joined it as a Java developer. So later I moved to Ruby and then Ruby on Rails. Why I moved to Ruby? Because of the syntax and some other formal issues with other languages. So I really like Ruby and Python. So as the company was working in Ruby, so I started work in Ruby. और उसके बाद अब तक मैं Ruby on Rails और Ruby mainly Ruby libraries पे ही काम कर रहा हूँ. So that is all, I guess. वंडरफुल, ग्रेट. सो जब करियर का आपने स्टार्ट किया तो सोचा था कि यार ROR में मैं काम करूंगा, या फिर एकदम से कैसे प्लान बना कि यार ROR में जो है वो मुझे जाना चाहिए? Well, I never heard ROR in starting of my career. I was simply a Java developer. When I joined my first company, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो ROR पे था और इसकी एक माइक्रो सर्विस जो थी वो जावा में थी. So yeah, they hired me for that service. Then they moved me to Ruby. So I loved the Ruby, especially the syntax, especially the features they ready, especially the libraries. So uske baad Ruby ke baad, after 6 months, I moved to Ruby on Rails, which was an awesome framework, I guess. Before that, I worked on Laravel and few other frameworks, and then I compare it actually with those frameworks, and I found it a really good and futuristic framework. Great, wonderful. Okay, Muni, we will be discussing about today's topic, and topic is very interesting and unique. You know, unique इसलिए है कि मुझे पता है कि ROR जो है, it's a very interesting technology. बहुत जबरदस्त. अभी हम आगे चल के भी इसके ऊपर बात करेंगे. तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, they just want to know that what is ROR. Okay, ROR, well, it's completely stands for Ruby on Rails, which is a framework of Ruby language. So it was designed in 2004. So ROR है क्या? ये complete framework है. So in a short introduction, I can say Ruby on Rails
is a Ruby framework to design web applications using a well-structured or well-defined structure in less time as compared to other frameworks. Yeah. Great. Bilkul theek. Okay. So, second question is that what are some advantages of using Ruby on Rails? Advantages. All Hmm. right. Well, before answering this question, I would like to point out a few factors we consider Hmm. before choosing a framework or language for our next project. So these factors are like, does that framework provides a basic security feature, or Hmm. does that provide automation test suite, or simplicity in development, or development time, or you can say collaboration of front end with back Hmm. end, and mainly maintainability. So after comparing different platforms using these factors, I found Ruby on Rails the best fit for web applications. So these are mainly the factors, or we can say the advantages. So let me highlight them. It is super easy to learn. I would Hmm. say super easy to learn. Hmm. Hmm. Then a large number of libraries it is having. Those are called gems. We can Hmm. simply integrate them with our application. Then a rich test suite, a huge and very active society, Hmm. very active community. If you have any question or issue or anything, you just post it, and you will get an answer within few minutes. Hmm. And code standards, I mean, better readability, minimize the amount of code, and you will get all the functionality. And Hmm. then high development speed, almost zero configuration. This is one of the fundamentals of Rails. You don't have to configure anything. And then the most important thing is the security. It provides Hmm. different kind of security levels and middlewares. So these are all benefits of Ruby and Ruby on Rails, especially. Great. Wonderful. Okay. The next question is that what is Rails scaffolding? Real scaffolding. All right. So almost all of the developers are familiar with the CRUD word. So if you have to create, update, delete, and Uh, show a record, you have to create a CRUD. So with scaffolding, actually Rails is one of the first frameworks who introduced this feature. You hmm. can you can create all of that functionality to create, read, update, and show our data within few seconds using Rails. So this is called Hmm. scaffolding. Great. Great. So, Muneeb, do you have an idea that what is page catching? Page caching, you mean? Yeah, page caching. Sorry, caching. Yeah. Yeah. Well, caching is the feature uh, that Rails provides built-in. Okay. Not only page caching, but also different kinds of caching, from starting from the backend. I mean, from models to then controllers, then to views. So Rails automatically cache the page content on very first time when you load it, and if you load it second time, it do it automatically. I mean, the page will be rendered from the caching. So that is how Rails makes it super fast. Great. Okay. So people are watching us, and I think that we're getting a very good feedback क्योंकि यहाँ पे जो लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी हमें देख रहे हैं और बाद में भी हमारा प्रोग्राम जो है वो देखेंगे Nice. ROR वेरी वेरी मतलब ऐसी जो मैं कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी है कि बहुत दुनिया में बड़े कम लोग जो हैं वो कर रहे हैं लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है आई मीन सो व्हाट इज द मेन रीजन मुनीब व्हाई जो बाहर में अगर हम देखते हैं अमेरिका में भी हम यूके में भी इवन के यूरोप में जहाँ भी तो ROR के बंदों को फटाफट से ऐसे ऐसे मतलब आई मीन वो कहते हैं कि किसी और को जॉब मिले ना मिले टेक में ROR वालों को तो फौरन ही जॉब मिल जाती सो व्हाट इज द मेन रीजन Uh, well, दो तीन मेन फैक्टर्स हैं. One of them is a trend. So a trend is already setted. I mean, जो कंपनी जो मार्केट के मेन हब्स हैं, आईटी हब्स हैं, they are already using it, like Airbnb, Groupon, GitHub, Shopify, Twitter and SlideShare. They are already using it. So एक ब्रांड तो सेट हो चुका हुआ है ROR का. अदर देन दिस जो टेक्निकल कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स नहीं है टेक्निकल साइड पे, ये है कि ROR इज वेरी इजी टू स्टार्ट विद. इट इज
it is taking way less time than other frameworks to develop a feature. It is more secure. So ये सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से ROR बाकी सारे फ्रेमवर्क्स से कंपेयर करने पे आपको बेटर नजर आएगी. सो इन वजह से ROR की जॉब्स भी ज्यादा है और सारा. वंडरफुल. अच्छा, अब जरा पर्टिकुलरली क्योंकि आई एम आल्सो इन HR और हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आता है, वो ये आता है कि पर्टिकुलरली अगर हम ROR की बात करें कुछ जगहों पे जाके, फॉर एग्जांपल जैसे कैंडिडेट्स हैं ROR के, पर्टिकुलरली अगर हमने उनको ऑफर भी की है, तो ऑफर करने के बाद समटाइम ये होता है कि लोग कहते हैं यार कि मैं नहीं आऊंगा, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो व्हाट इज द मेन रीजन? ऐसा ROR में ही क्यों देखने को मिलता है मुनीब? फर्स्ट ऑफ ऑल ROR की डेवलपर्स बहुत कम है. नंबर ऑफ डेवलपर्स आर रियली लो. सेकेंडली, जो करंट कंपनी जहां पे भी वो काम कर रहे होंगे, they have spent a time to train their developer. They won't let him go. In my opinion, they won't let him go. Thirdly, if somebody is applying for a job, he's not applying only in your agency. So उसके पास probably different options भी होंगे. So if you are the one who is offering him a job offer, so it is a possibility he's also getting from another party. ज़्यादा benefit नजर आ रहा होगा डेवलपर को, he might go that way. There are different kind of concepts. I don't know. Agreed. So, अच्छा मुनीब, let me ask you a very relevant and brief question is that कि अब for example कोई भी हमें लोग देख रहे हैं यहाँ पे बंदा या बंदी want to become ROR इंजीनियर, सो क्या उसको रोड मैप लेना चाहिए, कोई डिग्री करनी चाहिए क्या, पर्टिकुलरली कोई डिग्री होती है, आई मीन या फिर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, किस तरह से है? अगर ROR वो सोच रहा है कि यार ROR में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ROR के लोग बड़े कम है मार्केट में, तो डेफिनेटली लोग जो देख रहे हैं वो चाहेंगे यार कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मेरी भी वैल्यू जरा ज्यादा होगी, तो क्या रोड मैप उसको लेना पड़ेगा? Okay, not just for ROR, specifically for the development, you don't need a degree. मैंने मार्केट में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है. दे डोंट इवन गो टू द यूनिवर्सिटी. सो some of them started after a metric. So first of all, you don't need a degree, you just need a courage. So for the specific ROR, I guess ROR is the one of the easiest languages because I have done work in many languages, so I can compare them with ROR. So I can say ROR, Python, Swift, and then Elixir, all of these are having almost the same syntax. So if you started working with any of the single language, you can easily switch to other one because they have very similar syntax. And next question is why we have less people, especially in our universities. They teach us C, C++, or Java Max. So the syntax is entirely different. They use different types of blocks, they use semicolons and all those stuff. And when a person is coming from that background, he thinks, okay, ROR is kind of tough for me. And another reason is ROR magic. So sometimes it confuses people, especially for the starters. They don't know how this happened, but they don't know the logic behind the scene. ROR does it by itself. So these are the reasons people don't usually choose ROR. Great, wonderful. So Muneeb, do you want to give any messages to the ROR that मैंने देख रहा था कि माशाल्लाह the people are following you on LinkedIn और Facebook पे भी. So particularly कोई मैसेज जो है, जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं ROR में, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें तो what kind of message that you want to give? Yeah, sure. जरूर स्टार्ट करें ROR. If somebody can do metric, he can do ROR. It is that much easier. Yes, it is way easier than C, C++ or Java. So अगर आप वो कर सकते हैं तो आप Ruby easily सीख सकते हैं. So first step is to learn Ruby. You can easily, if you are good with C or C++ or any other language, you can move to C within a week, and then you can start working on ROR. Agreed.
Okay, Muneeb, thank you very much for joining us today. Let me have another segment, and segment is that the rapid fire. So All right. हमारा जो टॉपिक से रिलेटेड जो टाइम था वो तो पूरा हो गया. नेक्स्ट सेगमेंट इज दैट द रैपिड फायर. आई वुड आस्क वेरी जबरदस्त किस्म के धमाकेदार क्वेश्चंस टू यू. सो यू आर रेडी फॉर द रैपिड फायर सेगमेंट? Yeah, I'm excited. Great, wonderful. So the first question is that who is your inspiration to be a software engineer? Oh, well, one of my teachers. I Great. always sing coding, so I love how he code and how he behaves actually during the coding. ग्रेट, ठीक है. ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन जो रैपिड फायर का है वो ये है कि लेट्स सपोज कोई स्ट्रेंजर आपको देखता है, आपको देखते साथ ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में क्या होगा? A stranger's first impression of yours would be, देखते साथ क्या सोचेगा, यार ये बड़ा फ्रेंडली है या बड़ा गुस्से वाला है, या मीन इट्स लाइक दैट. Well, mostly I heard from the strangers that I'm not very friendly. I don't know why. अच्छा, ठीक है. ओके ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My biggest strengths are my parents. वाओ, ग्रेट, अमेजिंग, वंडरफुल. ओके, तो अगला सवाल है व्हाट्स द मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर स्मार्टफोन? It's WhatsApp. I was expecting an answer, same answer, because मेरा भी जो है वो WhatsApp ही है. Okay, agreed. Okay, okay. अगला सवाल है what superpower do you think that you have? Superpower. हाँ. I guess I'm good in marketing. I'm really good in marketing. Great. I recently started using my marketing skills, and I loved it. Great, wonderful. Okay जी, अगला क्वेश्चन है what excites you and motivates you in your role? Well, in my case, appreciation is one of the things that most motivates me. Okay जी, the final question is that one word that describes a tech professional. Dedicated. One. Dedicated. Great. मैं सोच रहा था ये ना आप कह देंगे यार रात को जागने वाला, सही सही रात जागने वाला, सही सही रात जो है वो काम करने वाला. I mean, it's like that. Great, dedicated, wonderful, great. So Muneeb, I think it was a great session. बहुत मजा आया आपके साथ इस सेशन को प्लान करके. It was a wonderful session, very informative. So I just want to request you that क्योंकि now the people are watching us on Facebook, LinkedIn, and YouTube. So what kind of message that you want to give to the Pep Talk Pakistani followers? Well, first of all, Hassan, you are doing a great job. Our country badly needs good software engineers. I have seen the software engineers in market, but they don't actually have knowledge. So they have the degree, but they don't have a knowledge. So आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. हमारे कंट्री को जरूरत है इस चीज की. Secondly, guys, if you are a software engineer or want to be a software engineer, it's time to start, especially in days. I can share a map. Let me tell you. During the COVID session, all this recession area, the only job which is increasing is the software engineering job. So it got 7 times peak than the previous days. Agreed. So let's start. If you want to start, let's start it now. Agreed. Wonderful. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. कोविड-19 ने सारे सेक्टर्स को तबाह करके रख दिया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जो है वो बूम मिला. फॉर एग्जांपल टेक सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. एग्रीड. और बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि भाई आप करना स्टार्ट कर दें. अब आपको कर लेना चाहिए. हमारा अलविदा ये होता है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं और जब काम की बारी आती है तो हम कहते हैं अच्छा देख लेंगे यार, कर लेंगे. ओके, ग्रेट, वंडरफुल.
वंडरफुल मुनीब क्वेश्चंस हमारा फॉर्मेट है कि हम क्वेश्चंस लेते तो नहीं है, लेकिन हाफिज अबू जफर का बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज के व्हाट इज बेस्ट इज जावास्क्रिप्ट और ROR, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज व्हाट ROR, जैसे कि आपने बता भी दिया है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि वो बेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हाफिज कोई जॉब स्टार्ट करना चाहे काम, तो वो ROR में जाए या जावास्क्रिप्ट में जाए? All right. Really good question. So ROR is a front-end related JavaScript is a front-end related language mainly. जबकि ROR front-end और back-end दोनों को deal कर रही होती है. So if you want to be a front-end developer, go with the JavaScript library. It is good to have a core skills of JavaScript, but go to with Vue or React or Angular. For front end. But if you want to be a full stack engineer, go with ROR, because you can easily find an integration of JavaScript or JavaScript library with ROR. Great, wonderful. Okay, Muneeb, thank you very much for joining us today, and I think it was wonderful session. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. Literally, you have contributed a lot, and best of luck, buddy, for your bright future. और आई वुड रिक्वेस्ट टू यू दैट कि फ्यूचर में भी आप पेप टॉक पाकिस्तान में आते रहें और इस तरह वैल्यू ऐड करते रहें भाई. Thank you so much, Hassan. Thank you so much for having me here. Thank you again. Thank you everyone for watching today's episode. मैं उम्मीद करता हूँ कि मुनीब फारूकी का जो सेशन था वो बहुत जबरदस्त रहा, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा. उन्होंने आज हमें बताया कि ROR में अगर आपने आना है और क्या स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी. लिटरली मैं आपको बताऊं, ये मुनीब फारूकी जैसे लोग, ये है हमारा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का. ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया हुआ है, और ये है असल पहचान हमारे पाकिस्तान की. अनकरीब मैं एक और एपिसोड कर रहा हूँ, वन ऑफ सीजन नेचर प्रोफेशनल और एक जबरदस्त ग्लोबल लीडर के साथ. वो कर रहा हूँ पाकिस्तान एज ए स्टाफिंग हब फॉर द वर्ल्ड. उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टेक सेक्टर है पाकिस्तान, वो दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान कैसे एक बेहतरीन इतने कंपैरेटिव टाइम के अंदर जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है. और हमारे यहाँ एक तरफ हमें इंडिया नजर आ रहा है, एक तरफ हमें बांग्लादेश है, तो हम किस तरह से कम्पीट कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अनकरीब वो सेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें हमें बड़ी कंपनीज के जो सीजन्ड प्रोफेशनल है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे. वो फिर हमें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान जो एक स्टाफिंग हब बना है पूरी दुनिया के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नए शो, नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. अगेन थैंक यू वेरी मच मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. Bye bye. टेक केयर.
आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज और दे रहा हूँ, ये लिख के आप अपने पास रख लें। जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप दुनिया के फारिग तरीन आदमी हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है। अब आप शायद हैरान होकर सुन रहे होंगे कि हसन रज़ा हमें ये कह रहा है कि आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको, आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो कुछ लोग सुनेंगे। आपने इन लोगों के सामने कामयाब होकर दिखाना है। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ये लोग आपकी अपनी पूरी फैमिली में या इर्द गिर्द हर जगह आपकी मिसालें दे रहे होंगे और कहेंगे यार ये वो बंदा है जो मेरे साथ बैठता था, जो मेरे साथ बात करता था। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तब सारी दुनिया सुनेगी।